अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मुजम्मिल और आप देख रहे हैं मुजम्मिल ऑटो सर्विस यूट्यूब चैनल। जी तो दोस्तों, ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर बाइक देख रहे हैं, इसके जो गियर ट्रांसमिशन है उसमें फॉल्ट है। जो इसका तीसरा गियर है, चलते चलते तीसरा गियर बिल्कुल यानी कि आवाज़ पैदा करके बिल्कुल गाड़ी सीज हो जाती है, जाम हो जाती है। इसका भी फॉल्ट हमने क्लियर करना है। जो इसके इंजन में से बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आ रही है, उसको भी हमने ख़त्म करना है। मज़ीद आपको इसका साउंड सुनाते हैं और फिर इसका काम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि गाड़ी बिल्कुल बंद हो चुकी है, यही इसका मेन फॉल्ट है। इसको भी हमने क्लियर करना है। जो इंजन में से साउंड की आवाज़ है, यानी कि जो इसका साउंड ख़राब हुआ हुआ है, टाइम चैन की आवाज़ है, कुछ और भी छोबरीकी से चीज़ें हैं उनकी भी आवाज़ है, उनको हमने रिप्ले करना है। दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ।
जी तो दोस्तों, इसको हम गियर ट्रांसमिशन भी बोलते हैं और गियर गुच्छा भी बोलते हैं। इसके जो दोनों फिंगर हैं दोस्तों, दोनों फिंगर इसके कट चुके हैं। इसके जो गियर ट्रांसमिशन की जो गरारियां हैं वो भी कटी हुई हैं। इसको हमने मुकम्मल गियर गुच्छा ही इसका तब्दील करना है। जी तो दोस्तों, गियर ट्रांसमिशन को फिट करने के बाद उसको अच्छी तरह ऑयल के साथ लुब्रिकेट कर लें और किक की जो शाफ्ट है उसे लगाने के बाद उसकी वार्शल को ज़रूर चेक करें कि उसकी वार्शल ऊपर है या नहीं। मेन टापे को फिट करने से पहले उसका जो गियर ट्रांसमिशन का बोल्ट होता है बैक साइड पे, उसको हमने पहले लगा लेना है। उसके बाद जो मेन टापे के बोल्ट होंगे उनको हमने टाइट करना है। Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, following the light that sets me जब भी आप क्लच बक्से का बुश लगाएं तो उसे ऑयल के साथ लुब्रिकेंट ज़रूर करें, ताकि जब हम बाइक फिट कर दें तो इसका सीज होने का खतरा होता है। जब ऑयल लगा हुआ होगा तो इसका सीज होने का कोई खतरा नहीं होगा। जब भी आप पिस्टन के अंदर रिंग इंस्टॉल करें तो इसका जो रिंगों का साइज़ होता है, सिलेंडर के अंदर आपने रिंगों को डाल के इनका साइज़ ज़रूर चेक कर लेना है।
जी तो दोस्तों बाइक का इंजन बिल्कुल तैयार है और इसको हम अभी स्टार्ट करके इसको चेक करेंगे। जी तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।